Welcome back, guys. Now we're going to be doing Magnetism Question 1, Paper 2, 5054. These past papers are out. आप इनको खरीद सकते हो on my Instagram, which is ink scribe 1. आप इन past papers को खरीद सकते हो. इनका फायदा ये होगा कि आप इनको simultaneously solve कर सकते हो. Aligned with my videos. आप मेरी videos के साथ simultaneously the past papers को solve कर सकते हो. And I think that would be better than you joining any institute, right? So yeah. Anyways, moving on. Let's continue. Question 1. Figure 6.1 shows part of a toy which contains two ring-shaped permanent magnets. So, there are two ring-shaped permanent magnets, a plastic rod between through the center. So, this is a plastic rod. The top magnet can move up and down freely around the plastic rod. The magnetic poles on the bottom magnets are shown. तो मैग्नेटिक पोल्स इसके दिखाया हुआ है ऊपर की तरफ नॉर्थ फेस कर रहा है नीचे की तरफ साउथ फेस कर रहा है. The top magnet floats in the air above the bottom magnet. So it is floating, right? On figure 6.1, mark the pose on the top magnet and explain why it floats in the air above the bottom magnet. आपने बचपन में ऑफ कोर्स मैग्नेट लिए हुए होंगे है ना. मैग्नेट्स आपने लिए होंगे या तो वो ग्रे कलर के सर्कुलर टाइप के मैग्नेट्स आते थे या वो ब्लू और रेड कलर के मैग्नेट्स आते थे. दोनों अगर आप सेम पोल्स को एक साथ लगाने की कोशिश करो दे हैव अ मैसिव रिपल्जन फोर्स. ठीक है ना. बहुत जोर से भी आपने बहुत दफा आपने किया होगा कि आप दोनों पोल्स को एक साथ लगा रहे हो बट नहीं लग रहे होंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ रिपल्जन बिटवीन द मैग्नेट्स. सो दैट मीन्स कि रिपेल हो रहे हैं दोनों मैग्नेट्स. अगर यहाँ नॉर्थ है तो इन ऑर्डर फॉर द टॉप मैग्नेट टू रिपेल इधर भी नॉर्थ होना चाहिए बिकॉज लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल. लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं दे अट्रैक्ट. तो ये नॉर्थ और नॉर्थ होगा एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर. तो ये देखते हैं टॉप मैग्नेट एन नॉर्थ पोल एट बॉटम एंड एस पोल एट टॉप. द पोल्स रिपेल एन ओके. So that is going to be the simple answer for the part 1. This is a very easy question. 2. The top magnet is placed with a ring made of iron. Explain why the iron ring sticks to the bottom magnet. It is because जब आप iron को close करोगे उस bottom magnet से it will become magnetized due to it being exposed to a magnetic field. जब the iron ring is brought close to the bottom magnet ये magnetize होगा and in response to the magnetic field of the bottom magnet. अच्छा, the bottom magnet as mentioned earlier has one of the poles facing upwards, which is the north pole, है ना. North है and the other pole facing south, which is downwards, है ना. जब आप iron ring को पास लाओगे to the magnetic field of the bottom magnet, it induces the magnetic field within the iron ring and ये इसको वक्ती तौर पे एक मैग्नेट बना देगा. ठीक है ना. सो या तो मैंने ये जो मार्क स्कीम में आंसर लिखा है आई हैव एक्सप्लेन दिस इन अ ब्रॉडर वे. तो जब आप आयरन को क्लोज लाओगे टू द बॉटम मैग्नेट इट विल बिकम मैग्नेटाइज्ड और इट विल बिकम अ टेम्पररी मैग्नेट एंड पोल्स प्रोड्यूस्ड ऑन आयरन. ठीक है ना. पोल्स कौन से प्रोड्यूस होंगे ऑपोजिट पोल्स अनलाइक पोल्स. तो कौन से पोल्स होंगे साउथ. North pole attracts South pole, bottom pole of the iron is South pole, so South pole on iron face, North pole on magnet. So आगे चलते हैं. B. A wire carrying a current passes at right angles through a piece of paper. Through a piece of paper. Wow. Figure 6.1, 6.2 shows a cross and circle where the current in the wire passes into the plane of the paper. So on figure 6.2, sketch three magnetic field lines. You have to sketch three magnetic field lines to show the magnetic field pattern around the wire and we have to show the direction. So we have to show the direction and we have to draw the lines. So first of all, the lines are going to be circular as we know. The lines are going to be circular and the direction will be
determined using the right hand grip rule. आपने सबसे पहले एक फिस्ट बनानी है और अपना थंब बाहर निकाल लेना है एंड इट इज गोइंग इनटू द पेपर. सो आपने तीन जो व्हाट डू यू कॉल इट एरोज हैं, दोज विल बी मेड क्लॉकवाइज. ठीक है ना, तीन एरोज आपने क्लॉकवाइज बना लेने हैं. एंड एन एक्स्ट्रा थिंग इज दैट between each of the circles there will be exponentially more space, because as we move away from the wire the magnetic field strength reduces. ठीक है ना. So these are the three things. Actually the third one was awfully easy and he didn't even ask for that. So yeah, as we move away from the wire, the magnetic field strength will drop, so that the circles around it, like it, they will have a larger distance between them. So yeah, that will give you the 2 marks. So that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.